Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. So in today's session we are going to talk about astronomy, about the universe, cosmology, and then its theories. तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। All right. I hope everything is all right. I mean about this live broadcast. So first of all, as far as our topic is concerned, so I will go from general to specific so that we nail down our concept or concerned topic. तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं साइंस ही शुरू करूँगा, ठीक है। एंड दोज हु आर लाइव दे मस्ट कंट्रीब्यूट, ओके। आपने साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रहना, एंड डोंट रन अवे एज वेल, ठीक है। भागना भी नहीं है और पार्टिसिपेट भी करना है, सो दैट यू ओन इट व्हेन यू एक्ट, बिकॉज यू आर लाइव पीपल, so you own it. So we have science, and you know very well about it. It's just simple the study of nature in simple words, ठीक है। ये हम नेचर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो साइंस है, and it includes everything. Now generally science is divided into two main areas, ठीक है। जनरली जो है ना, इसमें exact sciences and the other part is human sciences है, and technically it can be, you know, it can be applied science, you might heard it, and it can be, you know, pure science, जिसको हम theoretical science भी कह सकते हैं। that is technically applied भी हो सकते हैं, pure भी हो सकते हैं, जिसको हम theoretical science भी कहते हैं। लेकिन generally science includes exact sciences and human sciences. Now human sciences can be, you know, social sciences, and it can be liberal sciences, so we have no concern with that. ये हमारा टॉपिक नहीं है, right? Rather we are going to narrow down our concept, ठीक है। So this exact science is further classified into two major domains. One is natural science and the other one is formal science. Now formal science is further subcategorized into, as you know, mathematics है, इसमें मैथ है, इसमें लॉजिक या जो फिलॉसफी है जिसे हम कहते हैं वही चीज़ है, and it can be computer science as well as other minor sub fields, ठीक है। Now natural sciences has further divided into three major domains. One is
मटेरियल साइंसेस, ये मैं आपका कंसेप्ट बना रहा हूँ, ठीक है। लेट मी सी हु इज लाइव। दो पीपल है, ठीक है, और दो कमेंट्स हैं। आयजा खान, सो नाइस ऑफ यू। फायदा आप लोगों का है, मेरा नहीं है। मटेरियल साइंस, ठीक है, एंड द अदर लार्ज डोमेन ऑफ दिस नेचुरल साइंस कैन बी यू नो नॉन मटेरियल साइंस, नॉन material science, and the third part of this domain is yes, earth science. Now earth science has environmental science, as you know, environmental science. It has geography that we will be reading in our series in the relevant session, and it can be it is also to include geology. जियोलॉजी कुछ कॉन्सेप्ट है सिलेबस में, जैसे कि रॉक्स है और मिनरल्स है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अलबत्ता जियोग्राफी की लार्ज पोर्शन है, एनवायरमेंटल साइंस की मतलब लार्ज पोर्शन है। इसके अलावा नॉन मटेरियल साइंस हैज बायोलॉजी, और बायोलॉजी भी शामिल है हमारे सिलेबस में, प्लस इट्स आल्सो इट्स रिलेटेड फील्ड, जैसे कि बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, ठीक है, एंड इट इज इंक्लूड इन आवर सिलेबस एंड वी विल बी स्टडिंग इट, ठीक है। हो गया। नाउ द मेन थिंग अबाउट दिस नेचुरल साइंस इज इट हैज फिजिक्स की ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, अलबत्ता केमिस्ट्री की हो सकती है जो कि इसमें शामिल है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इट इज यू नो what it can be, yes, astronomy, the topic that we are going to discuss now in this class, ठीक है। तो यहाँ तक हम जो है ना एक सिस्टमेटिकली आ गए, ठीक है। मैंने आप माइंड मैप कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं एक तरीका। ये चीज़ें फिर आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, okay, so going further and elaborating this astronomy, ठीक है। So you tell me what do you know about this astronomy, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के जो भी आता है आपको, चाहे गलत हो या ठीक हो, लेकिन लिख को इंग्लिश में, so that you own it, that becomes a part of your brain. Let me see. Yes, material, non-material, yes, earth science, yes, very good. Aiza Khan. Okay, so astronomy is the study of everything beyond Earth's atmosphere, right? Astronomy is the study of what? Of everything except Earth's atmosphere. अर्थ की एटमॉस्फेयर के अलावा जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ एवरीथिंग बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। इज इट क्लियर टू यू? ठीक हो गया यहाँ तक? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये भी ठीक है, ठीक है। हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, और यूनिवर्स जो है ना ये एक्सेप्ट अर्थ एटमॉस्फेयर है। जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे तो वो यूनिवर्स है ना, बाकी चीजें तो अप्रोचेबल हैं। वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन अप्रोच टू देम इजीली, विच आर टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल चीजें तो हम वो कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं एंड फर्दर एक्सप्लोरिंग दिस एवरीथिंग।
एवरीथिंग में क्या है, अब क्या क्या चीजें हैं. सो दैट इज आवर मेन कंसर्न. सो everything is classified into two large domain. एक को हम 4% roughly कहते हैं and the other part is 96% roundabout कहते हैं. ये more than 96% है, लेकिन फिर भी हम जो है ना पर और convenience we take it just 96% and the other part is just less percent, but we take it just 4%. ये जो 4% है इसको हम कहते हैं visible part of what of universe which are tangible, observable. We can observe and we cannot touch as we mean it, but we can observe it in various methods. That includes 4% roughly, and the other part is invisible portion of universe. It is around about 96% जो है ना constitute करते हैं. Now this 96% is further divided into two domains. One is called dark matter and the other part is called dark energy. इसी की तरफ आते हैं. पहले इसको डिफाइन करते हैं 4% को. ठीक है, थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं so that we understand it. Now visible part can be इसको हम कहते हैं ब्रियोनिक मैटर. स्पेलिंग ठीक है, बी वो यस ठीक है, आई सी, ब्रियोनिक मैटर. इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट नॉर्मल मैटर. ये बस वही नॉर्मल मैटर है अगेंस्ट द इनविजिबल पार्ट जो हम देखने जा रही हैं. And the other part of 4% is non-luminous matter. Non-luminous matter constitutes your black holes, right? We will understand it later. And your intergalactic gas. ठीक है, ये दो चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं. Coming back to bionic matter, which are just normal matter. So from its name you must understand what it constitutes. So it has your galaxies, right? Your stars, which are the part of your syllabus. Your planets, your minor planets, your asteroids, meteoroids, comets, meteoroids and meteors. ये आपके जो है ना ब्रियोनिक मैटर है, which can be, हम ये जो है ना 0.0001% नहीं, ये नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ अर्थ. ठीक है, जो 4% में इंक्लूडेड है. ठीक है, लेकिन हम अगर अर्थ के हिसाब ले लिए 4% में तो ये तकरीबन 0.0001% भी नहीं बनती. ठीक है, छोटी सी, मतलब क्या हैसियत है इतनी बड़ी यूनिवर्स में, राइट? ओके,
इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक ठीक है? हाँ, okay, you are writing, it means that you are clear. Now exploring these two domain of the invisible part of the universe, which constitute roughly 96%. So dark energy are just dark matter, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकली बात करते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, एविडेंस है, जो आगे जाके हम कुछ बात करेंगे, 2-3 एजम्पशन है, इसको हम वो हमारी इस मैटर को या डार्क मैटर को या डार्क एनर्जी को सपोर्ट करते हैं. सो दे आर व्हाट, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. दे आर हाइपोथेटिकली एक्सोटिक या मिस्टीरियल पार्टिकल्स हैं that exert gravitational pull on matter but do not interact. ठीक है, ये क्या है? ये तो एक आपके एक्सोटिक पार्टिकल है जिसको हम मिस्टीरियस कहते हैं. एक्सोटिक पार्टिकल्स है. एक्सोटिक बाय मीन दैट वी डू नॉट नो exactly about these things, but some assumptions support or matter, right? That's all about it. और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये नॉर्मल मैटर पे जो है ना ग्रेविटी की इफेक्ट रखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन मैटर, राइट? कुछ इफेक्ट है इस डार्क मैटर की. नाउ डार्क एनर्जी, दे आर जस्ट एनर्जी है ना, इसको हम एम्प्टी स्पेसेस है, दे आर एम्प्टी स्पेसेस, वॉइड्स है, वॉइड्स, ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस आर मिस्टीरियस फोर्स दैट एक्सेलरेट the rate of expansion. ठीक होगा, यह ग्रेविटी की इम्पैक्ट है, यह जो है ना रेट ऑफ एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. वन ऑफ द रीजन है फॉर एक्सपेंशन, ठीक है. नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, टॉकिंग अबाउट दिस मैटर, कुछ चीजें हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट rotational velocity is directly proportional to the masses. मैंने ये लिया लेकिन चलो ठीक है, ये रोटेशनल वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ spiral galaxy, one of the type of galaxies that we will be studying ahead. Spiral galaxy is directly proportional to mass, its constituted mass. इसका मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा मास है, बड़ी मास है, उतना ही उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है. इसकी वेलोसिटी जो है ना, स्पाइरल गैलेक्सी की वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स करते हैं इसके मास पे. मास ज्यादा होगी, वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी ज्यादा होगी. स्पाइरल गैलेक्सी की मास कम होगी, इसकी रोटेशनल वेलोसिटी कम होगी. दैट्स सिंपल, ठीक है. यहां तक बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये जो है ना स्पाइरल गैलेक्सी जो है ना हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. इसके जो है ना शेप इस तरह होती है, मैं थोड़ा वो कोशिश करता हूं. इसकी आर्म इस तरह होती है, ठीक है. स्पाइरल जो स्पाइरल आउट करते हैं, इसके आर्म जो है ना आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं, राइट. इट्स आर्म्स रोटेट, इसकी जो आर्म्स है ना ये वाले, इट रोटेट्स फास्टर देन इट्स कोर. ये इसके सेंटर या कोर है, ये इसकी मूवमेंट जो है ना तेज होती है इससे, ठीक है. और ये हमने बात की कि अगर किसी
स्पाइरल गैलेक्सी की, जो कि हमारी मिल्की वे भी स्पाइरल गैलेक्सी है, टाइप ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है ना स्पाइरल गैलेक्सी की ज़्यादा है तो इस वजह से कि उसकी मास जो है ना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो है ना यू कैन इमेजिन द मास ऑफ द जस्ट इमेजिन वन आर्म ऑफ दिस गैलेक्सी as compared to the mass of the arm, one of the arm of galaxy is compared to the center of it, ठीक है। तो इसके मुकाबले में इस आर्म की मास कम होगी, लेकिन फिर भी जो है ना मोमेंट फास्ट करते हैं एज कंपेयर टू फास्टर देन इट्स कोर। समझ में आ गई नहीं ये बात, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप सो। जब ये बात होती है then we believe that some extra mass has come from dark matter, क्योंकि या तो मास कम है लेकिन it moves faster than its core, and core is more you can say voluminous, ठीक है। इसकी मास ज़्यादा है और इसकी मास कम है, लेकिन ये मोमेंट ज़्यादा करते हैं। So it is believed that some extra mass has been added to this arms, ठीक है, from the dark matter। ये कहाँ से आती है? डार्क मैटर से आती है, क्योंकि और रास्ता हमारे पास है ही नहीं अल्टरनेटिव, तो इस वजह से हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये एक बात तो ये हो गई। Another thing about it, its gravitational interaction with the rest of universe is the only way we know it exists। या हमने बात की ना, यहाँ जो है ना मैटर से इंटरेक्ट करते हैं। Another assumption है about the evidence or the existence of dark matter and energy। एनर्जी तो फिर भी जो है ना हमारे पास जो है CMBR है, CMBR, cosmic microwave background radiation, that we will be discussing later, ठीक है। तो ये दो बातें जो है ना हमारी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, मूविंग अहेड, that everything also include, I just forgot to write and to mention, but I should discuss it. Everything also include cosmology, ठीक है। ये cosmology भी है, and cosmology is what you must know it, right? cosmology क्या है? Cosmology is a sub-branch of astronomy, and it deals with the origin and development of universe। इसके दो मेजर डोमेन है बस, origin से रिलेटेड है और development of the universe से related है, that how universe has came into existence and how it evolved with the passage of time। Is it clear? Okay, so now we are going to elaborate these terms further। अगर हम origin की बात करें, ठीक है, so we some ideas come into our mind। First we have theories, and theories are generally six in number। हम ज़्यादातर जो है ना कॉस्मोलॉजी में जब इसके ओरिजिन की बात आती है यूनिवर्स की, कि हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, so we generally talk about sex theories, right? यहाँ तक ठीक है ना?
कुछ समझ में आता है या नहीं? Okay. So in these theories, number first is we call it steady state theory, not theory. Theory, not theories. Steady state theory. Now it says that the universe has neither end nor it has beginning. ठीक हो गया ना? इसकी जो है ना neither end है और nor beginning है. Rather matter is created continuously throughout the universe. मैटर को क्या क्या दिया गया जो है ना, कंटिन्यूसली ये क्रिएट होती जा रही है, कंटिन्यूसली क्रिएट होती जा रही है. राइट, दैट्स ऑल अबाउट इट. आगे इसमें कुछ ही नहीं है. ठीक है, थ्योरी है सिंपल, बस यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट वी हैव eternal inflation theory. It is a multi-universe concept. ठीक है, let me try in diagram for it so that you understand it. ये इस तरह कुछ, ये सेंटर है, एक यूनिवर्स इस तरह से ए और दूसरा जो है ना इस तरह से हो सकता है. एक इस तरह हो सकता, एक इस तरह जो है, ये तो मैंने वो कर दिया, लेकिन ठीक नहीं आ रहा. क्यों? एक इस तरह से हो सकते हैं. मल्टी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी. ठीक है, एंड ईच ओबेज इट्स ओन लॉज ऑफ फिजिक्स और यू कैन से नेचर. नेचर के अपनी अपनी जो है रूल्स वगैरह फॉलो करते, इस तरह एक्सप्लेन करते हैं. ये मल्टी यूनिवर्स कंसेप्ट है. दैट्स ऑल अबाउट इटर्नल इन्फ्लेशन. गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव oscillating यूनिवर्स, राइट, और साइक्लिक यूनिवर्स भी कह सकते हैं इसको. ठीक है ना? अब ये जो है ना, एज वी नो दैट बिग बैंग है हमारे पास, क्या होते हैं? एक्सप्लोजन होते हैं सिंगुलरिटी से. ठीक है, बिग बैंग हो गया, राइट. सो then big bang is followed by expansion that are still continue in time and space. Then expansion, it is expected that expansion is followed by big crunch. ये वापस अपनी जो है ना उसी पाम में आ जाएंगे. Big crunch mean that whatever you have in the space and time, your galaxies, your stars, your solar systems, right, your planets, your interplanetary system, and your everything beyond what we know, okay, in our Earth atmosphere, including Earth, right. So it will come into one point, just what we have at the beginning, and that is called singularity. या singularity start होती है, फिर expansion होता है, फिर जो है ना और बाकी जो इसका जो इनवर्स प्रोसेस, इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन. ठीक है, बिग क्रंच जो है ना इसको कंट्रैक्शन कहते हैं, इसी प्रोसेस को. इज इट क्लियर? ओके.
Moving further, and we have another theory, and that is oscillating universe brains. ठीक है, ये कहता है कि हमारे पास जो है ना इस तरह, लेट मी विजुअलाइज इट टू यू, इस तरह कुछ लार्ज प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, इसका हम जो है ना सेंटर री इमेजिन करते हैं, इस तरह एक्स वाई एक्सिस में ये ले सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम जो है ना क्या कहते हैं, ब्रेन जो है ना इसकी जो ये प्लेट्स है, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन इसको जो है ना अकॉर्डिंग टू वी इट सेज इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेम्ब्रेन। ये क्या है, आपके लार्ज मेम्ब्रेन्स है, जो कि क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स है जो कि दे collide with one another and gives rise to Big Bang। ठीक है, इसकी कोलिजन से के रिजल्ट, जब ये कोलिजन करते हैं इसके रिजल्ट ओनली वी गेट बिग बैंग, दैट इज ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन्स, ES आखिर में है। The other one we have exotic theories. Exotic theories are we can also say it solar theories, and it includes hologram. It has creationism, it has simulation। अब नाम से ज़ाहिर इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो मतलब साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरीज है जो कि नॉन साइंटिफिक सोर्स से आ गई है। एंड दे से दैट somebody is there to deceive us by continuously working throughout the universe। ठीक है, इधर टू होलोग्राम जो कि एक मतलब मॉडर्न कंसेप्ट है, मतलब इस तरह कुछ पता नहीं, लेकिन होलोग्राम है, ठीक है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। क्रिएशनिज्म एंड सिमुलेशन, जो कि नाम से जाहिर है कि ये साइंटिफिक नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया? अच्छा, एक ही बंदा है लायो, ये क्या प्रॉब्लम है? अजीब बात है, सिर्फ डंगे मार रही है कि मैंने क्लास करना है, ये करने वो करने, और फिर जब टाइम आते है तो भाग जाते हैं, या मतलब होती नहीं है, टाइम मैनेज भी नहीं करती। अजीब बात है। ओके, दैट्स योर प्रॉब्लम। याद रख, ठीक है ना? एंड द लास्ट thing about this theories that we have, that is the Big Bang। ठीक हो गया? This theory is widely accepted and highly discussed in academic circles। ठीक है, और ये इसलिए वाइडली एक्सेप्टेड हैं क्योंकि इसके कुछ एजम्पशन और साइंटिफिक प्रूवन ऑब्जर्वेशन भी इसको सपोर्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूजुअली टॉक अबाउट दिस थ्योरी। ठीक है, अब बिग बैंग जो है ना, इसकी कंसेप्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, दैट इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय फ्रेड हॉयल ने इसको प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और फिर आते हैं इसकी तरफ, ये वाला इमेज मैंने
या लेकर आई है फॉर योर कन्वीनियंस सो दैट यू अंडरस्टैंड इट विजुअली। फिर इसको करते हैं, जूम करते हैं, ठीक हो गया। एंड आई होप दैट नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक है, ओके। So Big Bang, according to this concept, that it was around, yes, it was around 13.8 billion years ago. There was a point which we now know as singularity नाम दिया गया है, and singularity was infinitely डेंसिटी जो है ना अनकम्पेरेबल थी। इसके टेम्परेचर भी हॉट, इनफाइनेटली हॉट, राइट, एंड इनफाइनेटली कॉम्पैक्ट और कंप्रेस्ड। प्रेशर भी ज्यादा था। अनइमेजिनेबल compressed, unimaginable hot, unimaginable dense, and that is called singularity, as well as infinitesimally small. We cannot imagine as well. Infinitesimally small भी थी। ये कुछ characteristics है इसके। And because of its intense activities, due to this property of the singularity, either density, hotness, and compactness, because of pressure as well as its size, it was exploded suddenly. ठीक है, ये explode कर गई। When 13.8 billion years ago के बात है, जब हम यहाँ से जो है ना टाइम में जो है ना पीछे जाते हैं। ठीक है, एंड देन यू हैव दिस सिनेरियो। यहाँ से जो है ना फिर आपका टाइम जो है ना स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड सिंपली दिस टाइम एंड स्पेस इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेजर डोमेन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक को हम यहाँ जो है ना आप ये स्टडी भी कर सकते हैं, गूगल में अवेलेबल है, मैंने यहाँ वहाँ से लिया है। ठीक है, ये मैं जो है ना ये खुद जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्या कि हमारे पास जो है ना एक डोमेन बनते हैं इसके। ठीक है, एक ये वाला हो गया, ये एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। एक अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जो कि वी कैन नॉट अप्रोच देयर ड्यू टू आवर एक्जिस्टेंस नॉलेज as well as devices. The other domain is potentially observable. That we hope we can observe, and the other part is we have present plus future, what we have and what will be the future of the universe. Assumptions है ना। So coming back to our unobservable universe, the time that we cannot approach there, so it says that when it exploded, this singularity exploded, so within a fraction of second, हाफ सेकंड में जो है ना यूनिवर्स जो है ना ग्रेप फ्रूट साइज की तरह के साइज जैसा हो गया विद इन अ सेकंड, एंड देन विद इन फ्यू सेकंड। ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होके
क्या बन गई, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो गई। और फिर जो है ना न्यूक्लियाई जो है ना इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके हमारे पास क्या आ गई, जो लाइट एलिमेंट है, बॉन्ड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, हाइड्रोजन जैसे कि और हीलियम, ये बन गई गैसेस है ना। दैट स्टिल द लार्ज पोर्शन ऑफ और स्टार सन, ठीक है, तकरीबन 99% जो है ये कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे सन में, हीलियम और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक हो गया यहाँ तक। नाउ it says further this observable universe, the part of the universe, that after the Big Bang around 300,000 years के बाद, after यहाँ तक जो है ना, we hope that we can detect radiation, can detect radiation, यहाँ तक हम पीछे जा सकते हैं। And it is the time after the Big Bang, तकरीबन 3 लाख साल बनते हैं ना, 300,000 years after the Big Bang. So it is potentially detectable area, only radiation, nothing else. But we cannot examine, keep in mind, detection एक अलग चीज है and examination एक अलग चीज है, ठीक है। और ये वही टाइम है, ये आफ्टर द बिग बैंग अराउंड 300,000 years, that it is characterized by ठीक है, when इस एरिया में क्या करे, मैटर जो है ना, मैटर react with matter and produced what, प्रोटो गैलेक्सीज बन गई with the effect of gravity. Under the gravity, matter coalesced into form proto-galaxies, and proto-galaxies were the earlier form of galaxies जो कि undeveloped हैं या underdeveloped हैं। fully developed galaxies है जैसे कि हम अभी जानते हैं। What else we have about this? इसमें जो है ना डार्क एनर्जी जो है ना, यहाँ डार्क एनर्जी जो है ना, एक्सपेंशन जो है ना, एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट। और फिर जो है ना क्या है हमारे पास, अराउंड 9 billion after the Big Bang, we know that solar system came into existence, and then around 10 billion years, ठीक है, सिंपल लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट करती है इसी एरिया में, सिंपल लाइफ, जैसे कि अर्लियर कॉमेट्स होती है या मेट्रॉइड्स होती है, ठीक है। और फिर ये भी एक एजम्पशन है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इट्स बिकॉज ऑफ दिस कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स कोलिजन विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक, इससे जो है ना, मतलब ये जब एक प्लेनेट से टकरा गई, ठीक है, तो इससे ऑर्गेनिक लाइफ जो है ना या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना शुरू हो गए, ठीक है। ये एक एजम्पशन है, ठीक है। कमिंग टू पोटेंशियली ऑब्जर्वेबल एरिया, ठीक है, मैं यहाँ कुछ यस सॉरी, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इसके बाद का टाइम की बात है ना। यस, गॉट इट। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये
it is the part of a potentially observable domain of the large universe. ठीक है, क्योंकि यहाँ मेटर मेटर कम्बिनेशन जो है ना, जो ग्रेविटी के अंदर होती है, प्रोटो गैलेक्सीज बनाती है, आगे जाके जो 10 बिलियन तक ये टाइम, इट इज आफ्टर द टाइम ऑफ 300,000 ईयर्स है, तो इट इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, पोटेंशियली ऑब्जर्वेबल. इज इट क्लियर? ठीक है ना यहाँ तक? And then we come to present time, future. ठीक है, so we have today, ठीक है, and then we have future. And according to assumption, that sun may become red giant where life would be impossible, and it will take around 100 of billion years, ठीक है, from now, and in that case expansion would stop. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, सन बिकम व्हाट, रेड जायंट बन जाएंगे. ठीक है, एंड दैट वुड यू नो मेक द लाइफ इम्पॉसिबल. लाइफ इम्पॉसिबिलिटी की तरफ हम जाएंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन. ठीक हो गया? ओके, सो कोई बंदा नहीं है कुछ पूछे. इट्स मीन दैट यू अंडरस्टैंड वेल. इधर यू डोंट नो or you know completely. That is the main scenarios. Okay, see you next time.